Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine and welcome to our online classes. And today we will discuss bookwork of chapter number 7. Okay, so let's start. First question is correct, tick the correct answers. Which of the following plants grows in water? Plants में grow होने वाले water में grow होने वाले plant बताना है हमें. So options are neem, duckweed, cactus and pine tree. And correct answer is duckweed because जो other plants हैं वो plains पे grow करते हैं. Clear? Second one is which of the following plants bear cones? इनमें से कौन सा plant है जो cone bear करता है? Means उस पर cones लगे होते हैं. Options are cactus, pine, mangrove and mushroom. And our correct answer is pine tree. Third one is which of the following is an underwater plant? Options are pondweed, duckweed, lotus and water lily. And correct answer is pondweed. Next question is breathing roots are found in. Options देखिए cactus, फिर mangrove and palm. And breathing roots कौन से plant में grow करती हैं? Mangrove plants में. Okay. Fifth one is needle-like leaves are found in plants that grow on. जो needle-like leaves हैं वो कौन जिन plants पे grow करती हैं वो found होती हैं वो plants कहाँ grow करते हैं? Plains, mountains, marshes and ponds. तो needle-like leaves मिलती हैं जिन trees पर वो mountains में grow करते हैं. Okay, so mountain is correct answer. Next, true false. फिर एंड पाइन ट्री ग्रो ऑन माउंटेन. फिर एंड पाइन ट्री है वो कहाँ ग्रो करते हैं? माउंटेन्स पर ग्रो करते हैं. यस, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकेंड वन इज लीव्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट्स आर रिड्यूस टू स्पाइन. कैक्टस प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो रिड्यूस होकर स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं. यस, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड वन इज duckweed and lotus are fixed plants. This statement is false. Fourth is leaves of a lotus plant are broad and float on water. Lotus plant की जो leaves हैं वो broad होती हैं and water पर float करती हैं. Yes, so this statement is true. Fifth one is non-green plants have chlorophyll. Non-green plants में chlorophyll होता है. No, non-green plants don't have chlorophyll. Okay, so that's why this answer is this statement is false. ये false होगा. Now name the following two examples of plants that grow on plain, that is banyan tree and neem. Second one is two insectivorous plant, pitcher plant and sundew plant. The season in which plants growing in plains shed their leaves, that is autumn season. And two examples of underwater plants are tape grass and pondweed. Fifth one is the structure that bears seeds in plants growing in mountains, that is called cones. Okay. माउंटेन्स पर जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो स्ट्रक्चर सीड बियर करता है मींस उस स्ट्रक्चर में सीड होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कोन्स कहते हैं. ओके, नाउ यहाँ देखिए आइडेंटिफाई द प्लांट्स एंड राइट देयर नाम्स. हियर आर शोन सम पिक्चर्स बिलो. कुछ पिक्चर शो की हुई हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है एंड बताना है कि कौन से प्लांट का पिक है. फर्स्ट वन देखिए दैट इज कैक्टस प्लांट. सेकंड वन इज मैंग्रोव ट्रीज. थर्ड वन इज पिचर प्लांट एंड फोर्थ वन इज मशरूम. Now next is यहाँ पे आपको एक वर्ड ग्रिड दिया हुआ है जिसमें से आपको कुछ प्लांट्स के नेम फाइंड आउट करने हैं एंड उनके फीचर्स लिखने. ओके, सो फर्स्ट देखिए फॉर एग्जांपल आपको बताया हुआ है नीम फाइंड आउट किया हुआ है एंड इट हैज मैनी ब्रांचेस. सेकंड वन इज स्प्रेस दैट इज इट ग्रोन इन माउंटेन्स. थर्ड इज लोटस, इट इज अ फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट. आप लोटस के बारे में बता सकते हैं और आप इसका ये फीचर्स भी लिख सकते हैं कि इसकी जो लीफ है वो ब्रॉड एंड फ्लैट होती है ना, वाटर पर फ्लोट करती हैं. एंड फोर्थ वन इज कैक्टस. यहाँ पे आपको सर्कल करना है कैक्टस में. ओके, सो इट ग्रोज इन डेजर्ट. कैक्टस कहाँ ग्रो करता है? डेजर्ट में. या फिर आप इसका दूसरा जो सेकंड फीचर है वो भी राइट डाउन कर सकते हैं कि जो कैक्टस की लीव्स हैं वो रिड्यूस होकर स्पाइन में रिड्यूस हो जाती है ना, to prevent water loss. Now come to our book work. Sorry, notebook work. So let's start. Here are some dictation words related to your chapter. Okay, यहाँ पर कुछ dictation words दिए गए हैं आपके chapter से related जिन्हें आपको क्या करना है?
ध्यान में रखना है कि इन वर्ड्स का यूज आपके जो क्वेश्चन आंसर्स आप लर्निंग करेंगे वहां पे भी होगा, ठीक है। लाइक प्लांट्स, हैबिटेट, adaptations, terrestrial, aquatic, plains, desert, mountain, marshy areas, evergreen plants, breathing roots, coastal plains, rainforest, floating plants, and underwater plants, insectivorous, carnivores, and saprophytic. Now, next is define. What is habitat? The place where a plant grows or an animal lives naturally is called its habitat. What is adaptations? The changes that help plants or other living organisms to survive in their habitats are called adaptations. Third one is terrestrial plants. So plants that grow on land are called terrestrial plants. Aquatic plants, plants that grow in water are called aquatic plants. And fifth one is, what is insectivorous plants? Plants that trap insects are called insectivorous plants. For example, pitcher plant and Venus flytrap. Saprophytic plants, plants that cannot make their own food and get their food from dead plants and animals are called saprophytic plants. Saprophytic plants non ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, सो दैट्स वाई ये अपना फूड खुद बना नहीं सकते हैं, सो ये फूड के लिए डेड एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक। द प्लेस वेयर अ प्लांट ग्रोज नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। एक जो प्लांट है नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका हैबिटेट कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। मैंगो एंड शीशम ट्री ग्रो इन प्लेन्स। Cactus plant grows in deserts and mangrove trees grow in marshes or marshy area. Now true false. Fir and pine trees grow on mountain. Yes, this statement is true. Leaves of a cactus plants are reduced to spine. This statement is also true. Duckweed and lotus are fixed plant. This statement is false. Leaves of a lotus plant are broad and float on water. True. And non-green plants have chlorophyll. False. Now write one word for the following. Where do fir and pine trees grow? So our answer is on mountains. Mountain पर grow करते हैं. Which types of plants have breathing roots? So option is mangrove plant है ना. क्या आंसर होगा हमारा? कौन से plants होते हैं जिसमें breathing roots होती हैं? That is mangrove plants. Third one is, which plant family belong to bamboo plant? That is grass family. And what kind of climate exists in desert? Hot and dry climate है ना. Desert में किस तरह का climate exist करता है? Hot and dry. Next is, what kind of coating is present on floating plants? Floating plants पर किस तरह की waxing present होती है, coating present होती है? That is waxy coating है ना, जो उन्हें rot होने से वो, because जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो वाटर में ही रहते हैं, तो वो प्लांट की जो लीव्स हैं या प्लांट रॉट नहीं हो, सो उसकी जो लीव्स हैं उस पर, प्लांट्स पर, पूरे प्लांट पर वैक्सीन कोटिंग प्रेजेंट होती है। नाउ नेम देम। The season in which plants growing in plain shed their leaves, that is autumn season. The structure that bears seeds in plants growing in mountain, mountains पर grow होने वाले plant में कौन सा structure है जो seed bear करता है? That is cones. Third one is, the place where a plant grows or an animal lives naturally is called its habitat. Trees that bear leaves throughout the year are called evergreen plants. Okay, ऐसे trees जिन पर throughout the year means पूरे साल green leaves रहती हैं, वो अपनी leaves shed नहीं करते हैं, ऐसे plants को हम क्या कहते हैं? Evergreen plants. The changes that help plants or their living organism to survive in their habitats are called adaptation. Now, next one is, name the following two examples of plants that grow in plains. Plains में grow होने वाले कोई भी two examples दे सकते हैं आप. That is banyan tree and neem tree. Two insectivorous plants, pitcher plant and sundew plant. The examples of underwater plant, that is jade grass and pondweed. Fourth one is, two things that we made from bamboo plants. Bamboo plants से कौन सी two things हम made कर सकते हैं? That is basket and mats. Two examples of non-green plant, mushroom and Indian pine.
Now, next question is differentiate between terrestrial plant and aquatic plants. Terrestrial plants में and aquatic plants में हमें differentiate करना है, इन्हें हमें difference बतानी है. So first difference क्या है दोनों में? First is plants that grow on land are called terrestrial plants and plants that grow in water are called aquatic plants. ये first difference है कि terrestrial plants जो हैं वो land पर grow करते हैं and aquatic plants water में grow करते हैं. Now, what is the second difference? Terrestrial plants are found in plains, mountains, marshes, and deserts. And aquatic plants are of three types: floating, fixed, and underwater. And third difference is examples हैं आपके in terrestrial plants के, that is neem plant, cactus, pine, mangrove, and coconut. These are example of terrestrial plant. And duckweed, lotus, and tape grass is examples of aquatic plants. Now answer the following questions. How do mangrove plants survive in marshes? Mangrove plant marshes में कैसे survive करते हैं? So in marshy area, sticky and clay soil with plenty of water is found, and roots of trees growing in marshes area like mangrove plants do not get enough air. Okay, वहाँ पर ये sticky and clay soil में grow करते हैं and इन्हें proper air नहीं मिल पाती है. Okay, enough air नहीं मिल पाती है. So breathing roots grow out of the soil and help the plant to take in air and grow well. Second question is name the various type of aquatic plants with example. Aquatic plants are of three types. First is floating plants. They are spongy or light in weight, so that they can float on water. जो floating plants हैं वो बहुत ही spongy and light weight होते हैं, इसलिए वो easily water पर float कर सकते हैं. For example, duckweed and water hyacinth. Fixed plant. These plants are fixed to bed of the pond with the help of their roots. Bed of pond means जो bottom होता है, ठीक है, किसी भी pond या lake का जो bottom part होता है वहाँ पर roots के through fixed होते हैं ये fixed plant. Okay. Examples are lotus and water lily. Third is underwater plants. These plants grow under the surface of water, and examples are tape grass and pondweed. Now third question is, can non-green plants make their own food and why? Okay, इसमें हमसे पूछा गया कि जो non-green plants हैं वो अपना food खुद बनाते हैं and अगर नहीं बनाते हैं then why? ठीक है? So non-green plants do not contain green pigment called chlorophyll. In the absence of chlorophyll, plants cannot make their own food. They get their food from dead plants and animals. Thus, they are called saprophytic plants. For example, mushroom and moss. Okay, in non-green plants में chlorophyll present नहीं होता है and chlorophyll के absence में वो अपना food नहीं make कर पाते and they get their food from dead plants and animals. इसलिए हम इन्हें saprophytic plants कहते हैं. Next is, what are insectivorous plants? So plants that trap insects are called insectivorous plants. They are also called carnivorous plants. They grow in poor soil. For example, Venus flytrap, pitcher plant, and sundew. Fifth question is, how does Venus flytrap plant trap insect? So the leaves of Venus flytrap plants are hinged to form a trap. They have sensitive hairs on them. When any insect touches the sensitive hair, leaf snaps shut, keeping the insect inside. The trapped insect is slowly digested and absorbed by the leaf. Sixth one is, give two features of the plants that grow on mountains. Mountains पर grow होने वाले two plants के हमें कोई भी two features बताने, okay? So on mountains, the climate is generally cold and two features are trees growing on mountains are tall, straight and conical in shape and they have needle-like leaves. Next question is, give two features of the plants that grow in desert. So the in desert, the climate is very hot and dry and two features are leaves in cactus plants are reduced to spine to prevent loss of water. And second features is the thick green and fleshy stem of cactus plant makes food and stored water. Clear? So here our chapter number 7 is complete.